Hello, Jai Hind student. Today we are going to study about the power sharing chapter which is from the democratic politics class 10th. Okay, so welcome to the Booster Smart SST channels. It is for the chapter of the class 10th CBSE. So now we'll start. So इन पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे जो है पावर शेयरिंग मीन्स व्हाट डिफरेंट ऑफ पावर्स, sharing of the power, division of the powers in a different organs. So now we see that what there is a two countries which is given the examples in your book. One is called as Sri Lanka and another country is a Belgium. Is it? You know, Sri Lanka forms the government on the basis of majority, and that is called as majoritarianism. Is it? And Belgium has formed the government on the basis of accommodation. So later we discuss about what the things and how it will be discussed in the future. So now come on the Sri Lankan part. In Sri Lanka we have seen what? In Sri Lankan government, as we know that in 1948 the Sri Lanka government have got the independence. Is it? Independence. After there is a one official act is passed in the 1956, and according to the official act, what the Singla's communities, Singla's speakers, is it? There are the many speakers which have discussed the composition in a before part 1 videos. This is the part 2 video. Okay, in a Singla communities which have in a majority, and according to this act, those communities have a majority in Sri Lanka. They have a right to rule. वही रूल करेगा जिसकी वो मेजॉरिटी है. Is it? So इसमें हुआ क्या, धीरे धीरे जो तमिल स्पीकर्स थे, they are also demanding for the rights, duties, or you can say that representation in a government jobs. Is it? In a government jobs, in educational institutions, they are demanding their representation. But due to the majority, Singla in a majority, so Sri Lankan government can't give any representation to the Tamil peoples. So they are disgraced and they are feeling alienated. Alienated means they are feeling alienated. Alienated means what? They treated as a separate, and they demand for the Tamil state. Is it? Because these are the Tamil speakers, they are belongs to the Buddhism, and they think that no one party has respect our culture and dignities except Tamils. So there is a one what but the Sinhalese government, they didn't want to give them any equal rights in education and government jobs and everywhere. They are ignored continuously, and due to ignoration, what happened? The Sri Lankan Tamils, they want to launch the one party. They want to form the one party. Is it? And later on, they want to become Tamil is an official language. किसकी डिमांड होने लगी कि तमिल जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए. ठीक है, इसी से जो है तमिल लोगों का रिस्पेक्ट वापस आ सकता है. And they want to securing the what educations and job and whatever. But in 1980s there are the several political organizations were formed during this and after the era of 1980s in the eastern part and western part. In the in a northern part of the Sri Lanka, they formed one party. This party name is called as Tamil Eelam, means they demand the separate state on the basis of Tamil speakers. But you know, due to the conflict arise and both are distrust during the countries, and it's lead to a what? Civil war. इससे दोनों के बीच में क्या हुआ? सिविल वॉर हो गया. इस सिविल वॉर से ये हुआ, सिविल वार का मतलब ये होता है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिस्टर्ट हो और वो अपनी ही कंट्री में अगर लड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए सिविल वार. इज इट? इट्स नॉट ए इंटरनेशनल वॉर.
या सपोज दैट अगर इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी सत्ता के लिए अपनी ही कंट्री मीन्स इंडिया में लड़ने लगे, सो दिस लीड टू ए सिविल वॉर। इस सिविल वॉर में हुआ क्या, दोनों पार्टियों के बहुत सारे पीपल्स जो है वो मारे गए, कुछ चले गए, कुछ रिफ्यूजीज बन गए, इज इट। बट यू नो श्रीलंका एट दैट टाइम देर इज अ वर्ल्ड टॉप 10 इकोनॉमी लाइक सिंगापुर, Taiwan, but due to the civil war, these economic conditions are totally bad. So now we see the accommodation in a Belgium. ठीक है, हमने अब इससे पहले भी श्रीलंका का देखा मॉडल क्या था, जो मेजॉरिटी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था. बट नाउ इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, यू नो, in majority it doesn't mean that the only majority rules. To disinterest are alienated from the what minorities principle. If any one majority country or majority or democratic country rule like this for the disinterest or disunity of the minority, it can't be successful. You have seen in the result of civil war in Sri Lanka. Now we come on the Belgium model. What kind of model adopted by the Belgium? So you know, there is in between the 1970 to 1993 in the Belgium constitution 4 times amendment. 4 times amendment. This is the 1 marks question which is comes in your CBSE board examination. So please mind it carefully. 4 times. This is 1 mark question. It maybe comes in an MCQ part. So amendment means what? Amendment means change in the constitution according to need and circumstances of the country. Like in Indian constitutions, in Article 368, it's provide the power to the parliament to change or amend in the Indian constitutions. ठीक है, like this same. Later on we will discuss the what is the amendment procedures. There are the 3 procedures in a simple majority, which is 1/3, special majority 2/3, and special majority plus half of the state. It means 2/3 majority plus half of the state, means out of 28 the 14 state must be given to the consideration, then it will be the change. So it's a very tough procedure for the changing of the constitutions. So here there is a one central government. If you just go remind, then you know what, somewhere it means in a whole country in a Belgium, Dutch in the majority. It means Dutch in the majority, is it? But in a Brussels, in a capital city Brussels, you know which one? There is a French in a majority. So what happened in a level of the central government? So Belgium has adopted the equal representation of the both government. Equal representation means अगर मान लो 50 मिनिस्टर्स होते हैं तो उसमें से 25 मिनिस्टर्स जो है वो फ्रेंच कम्युनिटी के होंगे और 25 मिनिस्टर्स जो होंगे वो डच कम्युनिटी के होंगे. तो उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे. दूसरा हम आते हैं, जो दूसरा जो उसने अडॉप्ट किया वो क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई. दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. वर्टिकल डिवीजन पावर में ये होता है जितने भी आर्गन्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे उसमें, लेकिन इसमें ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर में दोनों एक दूसरे को हैम्पर नहीं करेंगे, दोनों की पावर अलग अलग है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. लेटर ऑन वी विल गो इनटू द डिटेल. थर्ड जो था, जो उन्होंने एकोमोडेशन किया वो किया ब्रुसेल्स में, कैपिटल सिटी में. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी थी उसमें क्या था, तो ब्रुसेल्स में जो कम्युनिटी थी उनको भी उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया. फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल्स थे उनके लिए भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था. क्यों? क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में अडॉप्ट किया था यहाँ पे. इसलिए ब्रुसेल्स में भी क्या किया गया, जो स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन था, जो सिटी का रिप्रेजेंटेशन था, वहाँ पे भी इसको फ्रेंच और डच दोनों को इक्वल दिया गया. जो लास्ट और जो फोर्थ जो इन्होंने किया वो क्या था, जो फोर्थ जो टाइप्स जो थे उसमें ये थे, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दे फॉर्म दी वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट. दिस इज कॉल्ड एज ए कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? इन कम्युनिटी गवर्नमेंट देयर इज ए kind of government means the peoples living in a Dutch, French, German speakers, no matter where they live, if they are belongs to a cultural, educational and language related issues, so they form their own government. Is it?
इसलिए किया ताकि वो श्रीलंका की तरह जो है सिविल वॉर की सिचुएशन यहाँ क्रिएट न हो। इससे बचाने के लिए अपनी कंट्री को इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए इन्होंने ऐसा किया और ब्रुसेल्स को इन्होंने क्या बनाया, हेडक्वार्टर। ब्रुसेल्स को बनाया हेडक्वार्टर। ओके फ्रेंड्स, नाउ यू सी why power sharing is desirable. That is a big question and it's mostly comes into the board examination. I think this year it's also come in the board examination. Is it? So reason, there are the two types of most important reason why power sharing is desirable. Means what the benefit of the power sharing, why we are doing the power sharing. So reason one, there is a one reason, this is called as a prudential reason, and second one is called as the moral reason. You know, there is a power sharing is a good because it helps to reduce the possibility of conflict. ये क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट जो लोगों के बीच में है उसको ये ख़त्म करती है, लोगों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है उसको ख़त्म करती है। एंड इट्स प्रमोट व्हाट, इट्स प्रमोट द पीपल्स इन यूनिटी एंड डिग्निटी। ये लोगों के बीच में यूनिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करती है, जिससे हमारी कंट्री और स्ट्रांग होगी और यूनाइट होगी। So that is the most important task of power sharing, is it? But you know, it's reduce the social conflict. इससे क्या होती है, जब social conflict जब reduce होंगे, is it? It reduce the social conflict, जिससे country में political stability बढ़ेगी। इससे political stability country में क्या होगी, बढ़ेगी और strong होगा country, is it? And another reason you can say that the power sharing is a what? It's a very spirit of democracy. So you can say that those are the country who has adopted the democratic principle. So it's a pillar, it's a base. Means without doing the power sharing, means distribution of power, separation of power between organs of the governments, between levels of the governments, it's can't be possible. It means organs of the governments and between levels of the government, it can't be possible to run the democracy. So you can say that it's a very spirit, means very important reason for the democracy is a power sharing. What's happened in this? You know, it forms a legitimate government. Legitimate government क्या होती है? Where the citizens through the participation is acquire a stake in the system. That's, and you know, the prudential reason जो है वो किस पे फोकस करता है? This focus in a power sharing will bring out the better outcomes. इससे रिजल्ट जो है वो अच्छे आते हैं। जबकि मोरल जो रीजन है वो किस पे करता है? ये पावर शेयरिंग के वैल्यूएबल पे डिपेंड करता है। ये वैल्यूएबल को फोकस करता है कि हाउ मच इट्स वैल्यूएबल। दैट्स ओके। सो नाउ यू जस्ट टर्न इनटू द what kind of the forms of power sharing, is it? There are the many forms of power sharing which is discussed in your book. So power sharing, you can say that there is a 4 forms of the power sharing, is it? So now what's forms of power sharing? There are the 4 types of power sharing. Number 1, this is called as the in between the organs of government. Organs of government का क्या मतलब होता है? In our Indian country, let's take the examples. There are the different types of the organ of the country. Is it? Like, suppose that in our Indian government we take the examples. There are the 3 organs. One is called as executive, another one is called as legislative, another one is called as judiciary. ठीक है? एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, टू इम्प्लीमेंट द लॉ। लेजिस्लेचर का काम क्या है? इट्स वर्क इज बेसिक टू मेक द लॉ, लॉ को बनाना। और जुडिशरी का बेसिक काम क्या है? टू इंटरप्रेट द लॉ। ठीक है? ओके, टू इंटरप्रेट द लॉ। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इट मीन्स व्हाट? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि all our organs are separate but interconnected to each other. Is it? They are separate in the terms of power but interconnected to each others.
Is it? It means executive doesn't interfere in the power of legislature. Same legislature doesn't interfere the power of rest of two. Judiciary also doesn't interfere the power of legislature and executive. But these are interconnected. And in which principle they are interconnected? That is called as the checks and balance. Checks and balance की मीनिंग क्या होती है? जैसे सपोज दैट एक्सिक्यूटिव का काम तो इम्प्लीमेंट करना है, जिसका चीफ क्या होता है? प्रेसिडेंट. लेट्स टेक वन एग्जांपल्स. पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है वो किससे बनता है? लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनाती हैं. ठीक है, जब दोनों ये पास कर देंगी तो ये एक लॉ बनेगा. बिल पास कर दिया. ठीक है, अब जैसे ही जो है इस बिल को इसने पास किया किसने? लेजिस्लेचर ने. इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव. जब तक इसमें प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा तब तक ये लॉ नहीं बनेगा. एंड इट्स नॉट केम इनटू द इफेक्ट, और ये कभी इफेक्ट में भी नहीं आएगा. इज इट? एंड जुडिशरी का काम क्या है? अगर मान लो इसने लॉ बना दिया, इसने इम्प्लीमेंट कर दिया, बट प्रॉब्लम क्या आई? अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, आइदर स्टेट गवर्नमेंट, आइदर स्टेट वर्सेस सिटीजन्स, state versus state versus central government, so this can be entertained by the judiciary, means Supreme Court, High Court, according to this. This is the apex body of the country. इसका काम है इस मैटर को सॉल्व करना. सो ये हुआ ना चेक्स एंड बैलेंस, एक दूसरे को सब चेक्स एंड बैलेंस कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो प्रेसिडेंट कर रहा है, वो एग्जीक्यूटिव उसमें इन्वॉल्व है. जुडिशरी के काम में एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व है. लेजिस्लेचर के काम में एग्जीक्यूटिव यहाँ इन्वॉल्व हुआ. फिर इसका इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है? जुडिशरी कर रही है. तो दीज आर द प्रोसीजर इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. सो सेकेंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लेबल्स ऑफ गवर्नमेंट. लेबल्स ऑफ गवर्नमेंट. लेबल्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स जैसे इन इंडिया में आप लेते हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें हमारे यहाँ आती हैं म्यूनिसिपैलिटी आ गई, ठीक, एंड क्या आया? पंचायत आ गया. ठीक है, दिस सिस्टम्स इनकम. इज इट? इसमें क्या होता है कि जो सबसे ऊपर है दिस गॉट मोर पावर. सो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर हैज बीन गिवन टू द सम स्टेट गवर्नमेंट and both power is taken up, some of the power of central government, some of the power of the state government, both have been taken away and it gives to the third body that is called as a local self government. ऐसा हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, पावर को शेयर करने के लिए, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर होगी तो वो करप्ट हो जाएगा. Is it? The third forms of power sharing is called as a power shared in a third. So now third. So power shared among the different social group. Different social groups means powers इनके बीच में शेयर करना. वो कैसे करेंगे? That is forms and if you remember in the Belgium, so you remember as a community government. So जो community government में जो होता है different type of community on the basis of language, on the basis of culture, on the basis of religion, there are different type of communities, so they form in their interest they form the government. So that's why we represent and focus for the weaker section of the society. They have also chance to part in a government, so that's why we have adopted the what community government. And another term which is very popular here, this is called as reserve constituencies. In reserve constituencies we have reserved the seat for SC, ST and OBC. Why SCBC peoples? Why? Because they are incapable to come into the mainstream of society, so how they can part in the government? So that's why we have just launching the concept of the reserve constituencies. So due to that, SC, ST and OBC peoples also participate in the government. Next and last forms of power sharing, this is called as a what? Power share between the political parties. Political parties, pressure group and movements. Is it? It means for there are different type of political parties that represent their ideology and social groups. So ये political parties की जैसे इंडिया में भी बीजेपी उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, कांग्रेस इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, सीपीआई अलग आइडियोलॉजी है, सीपीएम अलग है. देयर आर द अदर रीजनल पार्टीज ऑल्सो, एसपी, बीएसपी. Is it?
Telugu Desam Party, TDP. So there are different parties. They have a different. So they have ruled there in the regional language, regional labels. Is it pressure group? There are the different types of pressure groups. Pressure groups means just there is the group of industrialist group. Industrialist का group है. Is it teachers associations हैं, labor associations हैं, lawyers association. There are different type of associations. They create the pressure on the government